Okay, so good morning, students. Good morning, sir. Good morning, students. Okay, so in the last class we have just started our discussion regarding the cylindrical coordinate system. Okay, so I have just explained the basic concept about the cylindrical coordinate system. That is, cylindrical coordinate system considers the universe to be in the shape of a three-dimensional cylinder, and the cylindrical coordinate system is always represented with respect to the Cartesian coordinate system. So that means the Cartesian coordinate system is taken as reference, and taking that in reference, the cylindrical coordinate system is being utilized. So basically it has three axes similar to Cartesian coordinate system. Okay, but over here we have the rho axis, phi axis, and the z axis. So rho represents the radius of the cylinder. So that means if P is a point over here, so we will locate this particular point P and we will draw a straight line with respect to the z axis. So that means before drawing the Cartesian coordinate system, cylindrical coordinate system, we have to first plot the Cartesian coordinate axis. Okay, so first when P is placed over here, and if it is asked that what is the location of P with respect to cylindrical coordinate system, then first we will draw the Cartesian axis xyz. Then from P we will draw a straight line with respect to z. So the distance is called rho. So that is the radius of the cylinder. Taking that in radius, we will draw the cylinder. Okay. Now once we draw the cylinder, then we will consider that what is the angle at which the point P is present with respect to the z. That means we will draw a straight line. But first we will draw the cylinder. Okay, that means circle, and then we will draw a straight line from P to the xy plane. Okay. Then we will join this line to form this particular plane. That is the plane of the phi axis. That means this is the phi axis. This is the phi axis. Okay. This one. Sorry, this is the phi plane actually. So phi plane. Okay. So we will draw this phi plane. So how to draw? Step by step. Step number 1, draw a straight line from point P to Z, then take that distance rho to be the radius of the cylinder and draw a circle like this in the form of a cylinder. Okay, then project it downwards on the xy plane. Once you have projected it, then draw this line. Then you will get this particular plane which I have represented by green line, and you will measure what is the angle of the plane with respect to the x-axis. So the second coordinate will be phi. Okay, that angle is phi. And then point P which you have connected to Z, you obviously know the height of Z. So that is the third coordinate, Z. That means your cylindrical coordinate system is complete. This is the complete cylinder. Okay, you don't have to draw the complete cylinder, you can draw a half circle also, and you can continue the calculation, okay, or measurement, whatever. So this is just a recap of what we have discussed in the last class, and this is a image, or you can say GIF, to explain in a better, you can understand in a better way that the three planes are there. Okay, I have already explained last class. I'm just once again explaining for those those who were not present in the earlier class. So the green one represent the rho, that is the radius. It is the radius of the cylinder. So as the rho increases, the breadth of the cylinder increases. That means if the rho increases, the size of the cylinder increases. Okay, then the red is the phi plane, this one, this plane. So if point P is over here, the angle is phi. If point P was over here, suppose somewhere over here,
Suppose this is point Q. So what we will do, we will draw a straight line. We will take this as rho 1 and we will draw a cylinder like this, and we will project it to x-axis like this. Okay, or actually it will be represented like this. Once again, 1 minute. This one we will draw over here. Okay, so this is one plane. Suppose this angle is bigger one, so we will call it phi 1. Okay, and height is suppose z, same, so it will be rho 1 phi 1 z. So suppose rho 1 is say equal to rho, suppose it is 5 units, angle is suppose it is 65 degree and z is 7, suppose. Okay, suppose this is 30 degree, this is 65 degree, whatever. So this way you have to look at them. Okay, so red is the phi plane and blue is the z plane, so it is moving upwards. So if the z value is high, the point will be higher. That means the point is higher, z value will be higher. Okay, so these are the coordinates. Okay, so this is actually this represent the different coordinates. So this is rho, this is z, this is phi, and these are the unit vectors of x, y, z. Now there will be unit vectors of the cylindrical coordinate system also. Okay, so there will be unit vectors for the cylindrical coordinate system also. So those unit vectors are a rho, a phi, and a z. So how to represent that? Very easy. See, whenever you have a point P, you are drawing a straight line with respect to z. If you extend this x line over here, suppose that means the axis is projecting outwards. That means as if you are drawing the line from z to P. When you are drawing the line from z to P, you extend it as if the direction is over here. Okay, so whichever way you are taking the radius, suppose the radius is like this, the radius is over here, there is a point Q over here, you are drawing a radius like this, so the axis will be over here like this. Okay, so the area where the point is located, okay, that means the location of the point P, if you are drawing a straight line from z, that will be the axis of rho. Okay, now the axis of phi will be, you are drawing the phi plane, this plane, you are drawing the phi plane. So if you are drawing a phi plane like this, and you are taking a perpendicular line, draw a perpendicular line away from the plane, that means this is increasing, that means it is rotating in this way. If you see the figure you can see the red one is rotating in a anti-clockwise direction, in this direction. Okay, red one. So here also, if you are drawing a plane, if you represent the point with respect to a phi plane, okay, then perpendicular to it will be the rho axis. That is the unit vector rho. Okay, it is the unit vector rho. So that is the rho axis, and z will be same as the Cartesian coordinate system, because z is common for both Cartesian and circular coordinates or cylindrical coordinate system. Okay, so now we have the three axes. This is the rho axis, and this represents the unit vector. This is the unit vector which represents the direction of the axis. This is the phi axis, and a phi is the unit vector representing the direction of the axis, and a phi is the direction of the z axis. So here also you can see all the axes are orthogonal, that means perpendicular to each other. Okay, they are also perpendicular to each other like this. If this is rho, this is phi, and this is z. So z is upwards, rho is over here, and phi is over there. So all are perpendicular to each other. Okay, so all are perpendicular with respect to each other. Okay, so have you understood? If you have any problem, you can ask. Do you understand this particular is basics of the coordinate system, circular coordinate system or cylindrical coordinate system?
Okay, then moving on. Now we will be discussing about the limits of the coordinate system. The limits. That means the limits means that we have this particular rho, okay, the radius. Obviously, the radius of any cylinder will start from 0. It cannot be negative. Radius cannot be negative. It will start from 0 and end at infinity. Maximum limit is infinity. So that is why the limit of the coordinate system rho is 0 to infinity. Okay. Now phi is the angle. See, this red one is the phi plane. It is rotating. So maximum angle it can produce is 360 degree. So it can be 0. If it is 0, that means it is lying on the x axis, okay, or xz plane. If a point is located on xz plane, then the angle phi will be 0, okay, and the angle will increase in the anticlockwise direction like this, okay. So if it is rotating in this way, so it will subtend an angle of maximum of 360 degree, okay. So that means it is starting from 0 to 360 or 2 pi. And z we all know, because z axis can start from positive z to negative z downwards also. Okay. So don't get confused, because in the earlier Cartesian coordinate system we have represented like this. This is the y axis, this is the x axis, this is the z axis, and we have also extended downwards. This is the minus z. Okay, this is minus y, this is minus x, because x, y, z all can be starting from minus infinity to plus infinity, all for x, y, z. But here only z is having a negative axis. Okay, that is why z can only have a negative axis, minus z. Okay, x cannot have. Sorry, rho and phi cannot have. Okay. So here if I represent over here, so z is only having a minus z axis. I can represent rho and phi. I cannot have represent a minus axis, negative axis. Okay. Now similar to Cartesian, if you have gone through the notes, I have already circulated the notes in the Google Classroom. Okay, so have you received the notes? Yes, sir. Okay. So in the notes you will see that this particular, and I also discussed in that particular notes also in the previous class, that in Cartesian coordinate system, whenever you are representing anything, you will represent by ax, ay, az. Okay. Here we will represent by a rho, a phi, az. That means over here only middle one phi will be represented in terms of angle, either degree or radian. Okay, so it can be suppose 5, 30 degree, 7. Okay, so that is 5 is a rho, 30 degree is a phi, and 7 is az. So these are the representation of a scalar. When you are representing vector, suppose we have a vector in the cylindrical coordinate system. So here the vector will be represented similar to the Cartesian coordinate system with respect to the unit vectors along the every respective you can say the axis. Okay. Okay, so this is the representation of a vector. That means if you have a vector in this way in a coordinate system, vector A. So vector A can be represented both in Cartesian coordinate system, also cylindrical coordinate system, also spherical coordinate system. That means any vector or any scalar. Scalar means a point, and any vector in a 3-dimension system can be represented in any coordinate system. Suppose you have a scalar in Cartesian, so you can convert it into cylindrical coordinate system. That is also possible. That I will show you, and vice versa. Similar for a vector also. So conversion of a vector is little bit complicated, but there are equations for that. Okay. So
if you representing a vector A in the cylindrical coordinate system, then you will represent in this way. Suppose 3 A rho plus 35 degree A phi plus 4 AZ, like this you can represent. That means that it is a vector and it is represented in the cylindrical coordinate system. Okay. Now what is the magnitude of this vector? The magnitude of the vector will be mod of A. The mod of A will be, this equation is exactly the same which we have seen in the Cartesian coordinate system. In that case, if you have a vector A and it is represented in the Cartesian coordinate system, then the magnitude of A can be calculated by taking the mod of A, that is root over of ax square plus ay square plus az square. Similarly, in cylindrical coordinate system also you can calculate the mod using the same equation. Here it will be the square root of a rho square plus a phi square plus a z square. Okay. And here also, since the three axes are orthogonal, that means perpendicular to each other, so the equation which we have seen for the cylindrical Cartesian coordinate system, that means the dot product and cross product. If you can remember, dot product and cross product which we have discussed in the last class. So the cross product of any two axes gives you the third axis. That means the cross product of x and y will give you z. Here also the cross product of the unit vector of rho and phi will give you unit vector z. Okay. Similarly, cross product of rho and z will give you phi. Phi and z will give you rho, and z and rho will give you phi. So the cross product of any two unit vectors in the cylindrical coordinate system will give you the third unit vector of the third axis, and the dot product of the two different unit vectors or different axes, okay, coordinate axis, will be 0. Why? Because the angle between them are 90 degree. So a rho dot a phi means magnitude, that is mod of a rho multiplied by mod of a phi cos of angle between them. So mod of a rho is 1 because it is unit vector. 1 into 1 cos 90 means 0. So here also it will be 0. Now if you multiply a unit vector with itself, that means a rho dot a rho or a phi dot a phi with itself. This is also same for Cartesian also. So here it will be 1. Why? Because the angle between them is 0, because you are multiplying with itself. Angle is 0. Okay. And if you find the cross product, it will be 0. Angle is, because angle is 0, so sine 0 is 0. Okay. I think this is known to you because in vectors you have already studied these things in your school level. Now differential length element. Now similar to the Cartesian coordinate system, we will be representing the differential length area volume for the cylindrical coordinate system in a same way, that means in a similar manner. That is, suppose this is a one by one, let me explain. Okay, let me take the help of a different platform. Okay, so these are the Cartesian coordinate axis x, y, z. Okay. And if you have a point P over here, okay, and you have another point Q over here.
Okay. Now if you want to represent in Cartesian coordinate system, it's quite easy. You will just take a dotted line like this, and you will take a dotted line like this, and you will measure what is x, what is y, what is z. Very easy. But here we will not represent in Cartesian coordinate system, we want to represent in cylindrical coordinate system. So we will not take this dotted line. So what we will do, yes, this particular line has to be taken. So this line won't be like this, it has to be represented in a different way, a little bit slanting. Okay. Okay. So now this angle is phi, this length is say rho, and this height is z. Okay. So we are writing the coordinates as, the p coordinate is, p is a point scalar, it will be rho phi z. Okay. So don't get confused with p and rho. Okay. So okay, I'm representing like r. Okay, that will be easier for you to understand. R, point R. Okay. Now if you have another point Q, you have to represent it the coordinate system, that is the cylindrical coordinate system. So here we will draw a dotted line like this, and this angle is suppose phi 2, this is rho 2, and this is z2, height is z2. Okay. Now if you want to travel from, okay, if you want to travel from R to Q, so you may say that we will take this particular route, but suppose you are not allowed to do that, you have to proceed step by step. Same explanation I have given you for the Cartesian coordinate system, if you can remember. In the same way you have to go in a step by step. So how can I go step by step? See, over here it is told that point Q is having the coordinates rho 2, phi 2 and z2, provided that rho 2 is greater than rho, okay, phi 2 is greater than phi, and z2 is greater than z. Okay. So all the three coordinates are more in size value. Okay. So that means to reach Q, you have to take this route. You have to first make sure that the rho is equals to rho 2. Suppose you draw a line like this. Suppose you have reached, now this length is rho 2, suppose. Okay. Then since the angle is also more, suppose that this angle you have to you know, encounter or travel, so we will take this angle. Okay, you are taking this angle. Okay. So now you are projecting this point over here. Okay, so now you are just lying on this particular axis. Okay, now it's okay. Now you have to increase the height also, and here increasing the height. Okay, once again. Okay, so suppose this is rho 2, this one, and taking this angle, drawing this angle. Okay, so this angle is lying on this particular plane, this angle. So suppose delta q, delta phi, this is also delta phi, and then drawing this line. So this line is delta z, that is z2 minus z1,
and delta phi is phi 2 minus phi 1. Okay, so that means how we have reached. First of all, we have increased the radius, then increase the angle, then increase the height. So angle is not straight line, it is curved like this, curved arc. Okay, it is curved. So here if you see, first one, so here we have 2 points P. Okay, this is one point P. Now there is another point, suppose over here. Okay, A. Okay, so this distance is the angle difference. Angle difference. Okay. So similarly, if you consider our case that we have taken, suppose this point was P. Okay, and this is, sorry, we have taken R. Okay, R, and this is Q. So what we have discussed, that point R is having the coordinates rho, phi and z. Okay, but point Q is having the coordinates, okay, rho 2, phi 2 and z2. Okay, so how to reach from R to Q? If this is rho, then this d rho is the extension, that is rho 2 minus rho. Okay, or rho 1, whatever, rho. So that means this one. So you have to travel in this direction, then you have to increase the angle, this angle, extra angle, this angle. Then we have to increase the height. So step 1, step 2, step 3. Now taking this, we can draw this particular arc, this particular, you can say, shape. Okay, this won't be a rectangle because we have a curve like this. Okay, we are drawing this. Okay, so since the increase in the length in all the 3 axes, that means we are increasing from rho 2 to rho 1. So the increase in the length is, say, suppose d rho. Okay, and increase in z axis, that means this figure, increase in z axis is z2 minus z. Suppose it is dz. Okay, same thing it is represented over here. Okay, this one is d rho unit vector rho, dz unit vector z. But for the phi, you can see it is not d phi unit vector phi, it is rho d phi. If you see this one, this is rho d phi. Okay, this one, this is the different thing, the axis, this is area. I will come to this later. So this length is rho d phi, rho d phi. This one, see, d phi, rho d phi, and then dz. So why rho d phi? The angle is phi. Can anyone tell why it is represented as rho d phi, not only d phi? Because the increase in angle is only d phi. Why? Because previously for point R the angle was phi, and for point Q the angle is phi 2. So if you subtract them, you will get, suppose I am representing by d phi. Similarly, we have represented for rho. Okay, so d rho, dz, but here not d phi, rho d phi. Why is it? Can anyone tell? सर लेंथ का हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए। हाँ, लेंथ तो ठीक है, लेकिन लेंथ जो है, मतलब कि ये वाला था ना, रो का तो लेंथ था, क्योंकि देखो लेंथ पहले था पॉइंट Q के लिए, R के लिए रेडियस जो था वो रो था, और जब Q पे जा रहे हैं हम, Q का रेडियस ज़्यादा है, मतलब मान लो कि उसका रो 2 है, बड़ा है, तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d रो लिखेंगे सब्ट्रैक्शन का, मतलब कि जितना बड़ा है उसका। ओके,
और z का भी वही है, हाइट अगर ज़्यादा है तो हाइट होगा dz, लेकिन एंगल हम ले रहे हैं डी फाई नहीं ले रहे, रो डी फाई, मतलब कि जो एंगल का डिफरेंस है ये वाला, ये मैंने जो यहाँ पर लिखा है मैंने, एंगल का जो डिफरेंस है वो फाई टू माइनस फाई है, मतलब कि फाई टू एंगल जो था वो ज़्यादा एंगल था क्यू के लिए, और फाई जो है वो आर का एंगल है, लेकिन हम लोग ले रहे जो डिफरेंस कर रहे हैं हम, डिफरेंस अगर डिफरेंस को लेते हैं तो कितना बड़ा है, डी फाई बड़ा है, लेकिन ये रो डी फाई क्यू है। अच्छा हाँ सर क्योंकि आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा इनटू रेडियस होता है। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो दिस इज द आर्क लेंथ। सो इफ यू आर taking, suppose you have a cone like this and this is angle theta, so this is the arc, this is called the arc। आर्क का जो लेंथ होगा वो मान लो कि इसका रेडियस r है, तो ये होगा r थीटा जी। अगर इसका ये वाला आर्क होगा, ये वाला लेंथ तो कम होगा इससे, इसका मान लो इसका है r1, तो ये वाला होगा r1 थीटा, ठीक है। सो वेरी गुड। सो इफ द रेडियस इज मोर, सो ऑब्वियसली द आर्क विल बी मोर। अगर इसका रेडियस इतना होता तो बड़ा आर्क होता, तो ऑब्वियसली इसका मेजरमेंट तो सेम नहीं होता ना, तो ये वाला सिर्फ एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्क को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हमको आर्क लेना है, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब आर्क पॉइंट आर से क्यू हम जब जा रहे हैं तो इसको रेडियस को हम इंक्रीज किए, फिर ये वाला डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, अगर यहाँ से ट्रेवल करते तो कम होता, लेकिन यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि हमको पहले रेडियस को इंक्रीज करना है। सो यू हैव टू फर्स्ट इंक्रीज द रेडियस, देन यू हैव टू इंक्रीज द आर्क। ओके, सो वंस वी इंक्रीज द वी हैव टू मींस फॉलो दिस आर्क, so this arc is rho d phi because the angle is d phi, this angle is d phi and the radius is rho, okay, so it is rho d phi, okay, so this is the differential length, okay. सर हाँ सर लेकिन ए फाई एक्सिस में तो सिर्फ हम लोग एंगल डिफाइन करते हैं, तो फिर आर्क लेंथ क्यों करेंगे हम लोग? नहीं ए फाई एक्सिस में हम लोग हमेशा एंगल ही रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई अगर वेक्टर है तो वेक्टर के लिए सही है, क्योंकि हम लोग ऐसा लिखेंगे, मान लो कि 3 यूनिट वेक्टर रो प्लस 20 डिग्री, वो बात सही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लेंथ को नाप रहे लेंथ, क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ऐसा ही था कि हम जो लेंथ को नाप रहे तो ऐसा लिखते थे dx यूनिट वेक्टर x प्लस dy यूनिट वेक्टर y प्लस dz यूनिट वेक्टर z, वो dl था, ठीक है। तो लेंथ को, क्योंकि यहाँ पर एक लेंथ हम नाप रहे हैं, मान लो कि ये वाला कार्टेशियन में क्या था, कार्टेशियन में क्यूब ड्रॉ किए थे हम लोग, क्यूब ड्रॉ किए थे ना, ऐसा क्यूब को ड्रॉ किए थे, तो क्यूब का जो लेंथ है तीनों एक्सिस में, तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ऐसा नहीं, ये वाला तो y एक्सिस था, हाँ, तो x एक्सिस, z एक्सिस, y एक्सिस, तो तीनों डायरेक्शन में जब हम लेंथ को नाप रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर है ना, क्योंकि 3 डायमेंशन में अगर एक ही डायरेक्शन में लेंथ माप रहे हैं तो ठीक है, वो तो सिंगल डायरेक्शन में हुआ, लेकिन अब 3 एक्सिस को मिला के लेंथ माप रहे हैं, 3 एक्सिस को मिला के लेंथ को नाप रहे हैं जब, तब हमको ये वाला डिफरेंशियल लेंथ का इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला डिफरेंशियल लेंथ। सो दैट मींस हाउ मच लेंथ is increasing from one point to another. This is the increase in the length. That means from point R to point Q जब हम जा रहे हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल ये में 3 डायमेंशनल सिस्टम में, तो हम लोग पॉइंट स्केलर ही ले रहे हैं, लेकिन जब मूव कर रहे हैं फ्रॉम R to Q, we are moving. So moving means it is after movement we are reaching Q. So after we reach Q, we will measure the what length we have traveled, कितने हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा वेक्टर होता है, इसलिए इसको वेक्टर के हिसाब से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये जो है हमेशा लेंथ होगा, तो एंगल जो है वो एंगल नहीं रहेगा, लेंथ हो जाएगा। अगर एंगल का लेंथ हो मतलब आर्क है, जब भी तुमने कहा, तो
इसलिए हम लोग आर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, अब ये जो हमारा फिगर जो बन गया है ये वाला, तो इसका अगर एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालेंगे? जैसे कि कार्टेशियन में निकाला था, तो किसी दो साइड को लेंगे, ठीक है? एक मिनट यहाँ पर, हाँ ये फिगर देखो, ये जो है ना डिफरेंट कलर में है, ब्लू ग्रीन रेड, ये सेम है, सिर्फ ये जो छोटा वाला दिखा रहा है ये अलग अलग प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि ये वाला अगर ब्लू वाला देखो, बड़ा वाला, ओके, इसमें क्या है, इसमें ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ है, ये है डी रो, ठीक है, डी रो है। तो ये डी रो मतलब कि ये वाला भी डी रो। अगर हम एरिया मेजर करना है, ठीक है, अगर हम मान लो ये डी रो है, ये डी जेड है और ये रो डी फाई है, तो मान लो कि इस एरिया को मेजर करना है, ये वाला एरिया, तो कौन सा प्लेन लेंगे? रो डी फाई वाला लेंगे और डी जेड वाला लेंगे। तो इसका एरिया कितना है? अब एरिया तो है वो, ये तो रेक्टेंगल के हिसाब से दिखा रहा है, लेकिन रेक्टेंगल नहीं होगा, थोड़ा कर्व होगा, ठीक है, थोड़ा कर्व होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका जो है वो एरिया का फॉर्मूला तो सेम होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो रो डी फाई इंटू डी जेड। अब जो एरिया है वो भी वेक्टर है, क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, सो द एरिया इज ऑल्सो वेक्टर, सो द यूनिट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नाउ दिस फाई इज इन दी फाई एक्सिस, क्योंकि यहां पर देखो इक्वेशन जो है, ये जो है ये फाई एक्सिस में है, रो डी फाई इज इन दी फाई एक्सिस। ओके, so rho d phi is in the phi axis and rho d z in the z axis. So the resultant will be perpendicular to both the axes. The resultant unit vector will be perpendicular to both the axes. अब perpendicular to both the axes कौन सा वाला? ये वाला, रो ई वाला। So phi और z का perpendicular है रो, so रो एक्सिस जो है वो होगा resultant unit vector. So यहाँ पर लिखो unit vector रो लिखा है, यूनिट वेक्टर रो लिखा है, ठीक है। अगर दूसरा एक्सिस लेंगे, मतलब कि दूसरा प्लेन का सरफेस का अगर एरिया निकालेंगे, क्योंकि 3 सरफेस है ना, 6 सरफेस है टोटल, लेकिन दो कॉमन होता है, टॉप और बॉटम कॉमन होता है, राइट और लेफ्ट कॉमन होता है, और फ्रंट और बैक कॉमन होता है। तो ये वाला मान लो कि ये वाला एक्सिस प्लेन हमने लिया है, अब दूसरा वाला प्लेन लेना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग ऊपर का हिस्सा लेंगे, ये वाला, इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो कर्व है, आर्क है, आर्क का लेंथ है रो डी फाई एंड द रेडियस लेंथ इज रो फाई, ओके, सॉरी डी फाई एंड रो डी फाई, सॉरी डी रो is the length of the radius, d rho, and this is rho d phi. Okay, so the area will be product of these two. Now this is rho d phi, so it is means traveling in the rho axis and phi is traveling in the phi axis. तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या? z एक्सिस। ओके, सॉरी ये वाला तो इसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 1 सेकेंड। सॉरी, हाँ ये वाला जो था ये एक्चुअली ये इसका रो सेम है फिगर, ये थोड़ा गलत है, ये वाला दिखाना नहीं है, ये दिखाना है डी जेड दिखाना है, डी जेड। तो मतलब ये वाला सरफेस, एक सेकेंड, हाँ ये वाला सरफेस, ठीक है। ये इसकी जरूरत नहीं है, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला मतलब कि ये राइट और लेफ्ट, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो
तो इसका जो लेंथ है वो है डी रो। सो डी रो का एक्सिस जो है वो यूनिट वेक्टर रो है, z का जो एक्सिस है वो यूनिट वेक्टर z है, ऊपर है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला। अगर दोनों एक्सिस मिल रहा है, मतलब कि रो एक्सिस है z एक्सिस है, तो तीसरा वाला कौन सा लेफ्ट आउट है, ये वाला रो वाला। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होगा, मतलब कि इस सरफेस का एरिया होगा डी रो इंटू डी जेड यूनिट वेक्टर फाइव, ठीक है। और लेफ्ट आउट ये वाला तो इस सरफेस का था। सो फ्रंट वाला हो गया, राइट एंड लेफ्ट होगा, टॉप बॉटम। टॉप वाला ये है, टॉप और बॉटम सेम है। सो दिस लेंथ इज रो, सो द एक्सिस इज ए रो, ओके। एंड ये वाला जो है वो आर्क है, तो इसका एक्सिस होगा ये वाला फाई। अगर फाई है तो फाई के डायरेक्शन में होगा। Okay, so the resultant will be perpendicular. So resultant is perpendicular. So ये वाला perpendicular है z axis, okay, ठीक है ना। तो टॉप वाला जो है, टॉप वाला था रो वाला, मतलब कि रो एक्सिस में जो लेंथ था, मतलब कि डी रो, ठीक है। तो मतलब डी रो डॉट आर्क वाला, ये वाला इसका, तो इसका लेंथ हमको मिल गया है, इसका लेंथ हमको है पता है। तो इसका लेंथ है डी रो मल्टीप्लाइड बाई रो डी फाइव, और रिजल्टेंट होगा यूनिट वेक्टर z। तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, रो को पहले लिखेंगे रो डी फाइव यूनिट वेक्टर फाइव, वही हिसाब से लिखा है यहाँ पे। तो यूनिट वेक्टर z एक्सिस में, ठीक है। तो सर वो तो रेक्टेंगल जैसे अजम्पशन हो गया सर। कौन सा? हाँ, रेक्टेंगल जैसे करना है, क्योंकि ये जो आर्क है ना, इसका सरफेस एरिया वैसा ही मेजर करना है हमको, क्योंकि आर्क जो लेंथ है इसका सरफेस एरिया ऐसे ही करना है, रेक्टेंगल अजम्पशन के हिसाब से करना है। क्योंकि आर्क जो है वो हम लोगों ने इसको किसी एक पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट किया है ना, किसी एक पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है, तो इसका एंगल था फाइव, ठीक है। अब जो इसका लेंथ है रो, सो इसका आर्क हो गया कितना, रो डी फाइव, नो सॉरी ये डी फाइव है, डी फाइव। तो एंगल जो है वो डी फाइव है, तो आर्क हो गया रो डी फाइव। तो ये जब हमको एक लेंथ मिल गया ना, तो इस लेंथ को हम जब दो डायरेक्शन को मिल गया, तो दो डायरेक्शन का लेंथ अगर मिल गया तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। इसे रेक्टेंगुलर एजम्पशन फॉर्मूला के साथ ही निकालेंगे, लेकिन क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल जब हम प्लॉट कर रहे हैं ना, तो इसके लिए यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि when we are discussing about the coordinate system and we are talking about the vectors, so the area will be as a vector. So the formula is equal to the rectangular formula, only the resultant unit vector will be added. अब ये कैसे मिलेगा? वेरी सिंपल, जो मैंने अभी बताया है, जो दो डायरेक्शन है, मतलब कि दो जो लेंथ है, ठीक है, जो पहले वाला लेंथ है, मतलब कि रो वाला, सो एक रो है और एक कर्व है, ये रो है और ये कर्व है, ये दो है ना लेंथ। तो रो कौन सा एक्सिस में है, ए रो, कर्व कौन सा एक्सिस में है, ए फाइव। तो रिजल्टेंट है ए जेड, तो इसलिए ए जेड निकला, यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। इज इट क्लियर? ये समझ में आया कि क्यों हम लोग इसको रेक्टेंगुलर फॉर्मूला में लिखे हैं, लेकिन फॉर्मूला एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर नहीं है, क्योंकि मेजरमेंट के लिए हम लोग जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे उसके साथ, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ दी एक्सिस। और जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम तो स्केलर है, ठीक है। तो वॉल्यूम को स्केलर है, तो वॉल्यूम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो फॉर्मूला हो जाएगा रो डी फाइव डी जेड। सर वो तीनों का लेंथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बिल्कुल एक क्यूब की तरह हो गया सर। तो फिर लेकिन उसका शेप तो क्यूब जैसा नहीं है सर, तो फिर वो क्यूब तरह नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जब हम लोग अगर रो को घटा देंगे ना, ये वाला रो को घटा देंगे तब क्यूब होगा, लेकिन जब रो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ना रो डी फाइव,
इसका मतलब ही है आर्क, इसका मतलब ही है आर्क, ऐसा ही होगा शेप उसका, ठीक है ना, उसका शेप ऐसे ही होगा जैसा होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि ये वाला। तो ये वाला जो है, जब हम तीनों एरिया को हम तीनों साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम जब निकलेगा ना तो ऐसा ही निकलेगा, क्योंकि दिस इफ दिस इज रो डी फाई, so that means it is obviously understood that this is the curve. Along with that we are multiplying d rho and dz. तो पूरा जो है पूरा एक वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं हम लोग, ये पूरा वॉल्यूम है, तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन दी कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मान लो कि ये रो डी रो नहीं होता, डी फाई नहीं होता, कुछ और होता, मतलब कि सिर्फ डी फाई होता, तो डी फाई कोई लेंथ होता, तो वो तो रेक्टेंगल हिसाब से होता, ऐसा वो रेक्टेंगुलर होता, और क्यूब होता, सॉरी क्यूब होता, और क्यूबॉइड वट एवर। सो डी रो, डी फाई एंड डी जेड। लेकिन हम लोग जब इसको ऐड कर रहे तो ये मतलब कि ये आर्क है, समझ आया, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, okay, so any more questions? Okay, so I'm just taking this screenshot of the attendance. Okay, so time come in. Okay, so I'm taking the screenshot of the attendance. Okay, so you may leave now. Okay, thank you, and I will share these notes with you in the Google Classroom. If you to go through the notes, if you still have any problem, then you can, we will obviously discuss in the next class. इसको सम करो, इसको समझो। अगर कोई मतलब कि कोई डाउट है या फिर तुम लोगों को लगता है कि नहीं ये इक्वेशन ठीक है लेकिन इसको और भी तरीके से डिराइव कर सकते हैं, तो इट इज वेरी ओके, दैट इज वेरी 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 वेलकम, दैट विल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो देन थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir.